Pooja, and today I'm going to tell you top 5 makeup products / tools to invest your money in so that your makeup looks amazing and stays on for long. So without further ado, let's get started. Okay, so we all know आजकल मार्केट में इतने सारे products आ गए हैं. Some are high end, some are low end, and there's so much that you see on Instagram and I think hoardings and mailers that हमें लगता है कि हम सब कुछ ले लें. But of course, it is not sensible to invest your money in makeup, especially expensive makeup and tools. So I thought I'll tell you top 5 products and tools that will actually help you. These are the products जिसमें अगर आप अपने पैसे invest करेंगे, then actually your makeup is going to stay on for long and it will be worth it. First and most importantly, you need a good foundation. So foundation, as we all know, is the base of makeup. So अगर foundation अच्छा होगा तो उसके ऊपर आप कोई भी blush लगा लीजिए, bronzer लगा लीजिए, highlighter लगा लीजिए, it is going to pop. Today I'm wearing a high-end foundation and everything else on my face is drugstore. So you can see that if you have a good foundation on, वो ज़्यादा टाइम तक stay करेगा, वो patchy नहीं लगेगा, आपका oil seep out होके बाहर नहीं आएगा. It's going to look really nice and fresh throughout the day. So I'll tell you 3 of my favorite foundations. First one is MAC. अगर आप अभी like first time थोड़ा सा high end कुछ लेना चाहते हैं तो I think MAC is a great option. First of all, MAC बहुत easily मिल जाता है. सबके घर के आसपास जो भी malls होगा सब में MAC है. खान मार्केट में इंडिविजुअल स्टोर भी है मैक का अगर आप मॉल नहीं जाना चाहते हैं तो. एंड इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव. आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 1900 एंड एक बॉटल ऑफ फाउंडेशन एटलीस्ट मेरे लिए आई थिंक ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8-10 महीने तो चलती ही है. एंड सो दैट इज अ लॉट. इट इज़ pretty cost effective. आप जब भी MAC foundation wear करेंगे, it looks really nice, fresh, natural, not like skin like natural, but natural enough. It doesn't look like you're wearing too much makeup. It stays on for really long time and I think it's going to work for all skin types. अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल का ड्रॉप डाल के यूज कर सकते हैं and it's going to work amazingly. Next foundation that I really like is Huda Beauty. And अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है and if you want something to cover up your acne, then this is a great foundation. ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है but it is totally worth the cost. And third foundation that I would like to recommend is Fenty Beauty. Now this is the foundation that I'm wearing today. It is just amazing. It is my current favorite. It is expensive but again you just need a pea size amount, so this is going to last you like forever. These are the 3 foundations that I recommend. अगर आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हैं तो बेस को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है. These foundations look really nice. So अगर आपको अभी थोड़े से पैसे अपने मेकअप में इन्वेस्ट करने हैं तो आई वुड से कि सबसे पहले एक अच्छा फाउंडेशन खरीदिए. Next, it is very important to apply your foundations with the right tools. So I would suggest buying some good quality brushes. Alright guys, so here are all my brushes and it is very important to have गुड क्वालिटी ब्रशेज. अब गुड क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आप डिज़ाइनर ब्रशेज खरीदिए, बट आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे अगर अपने ब्रशेज में तो जो आपका मेकअप है, चाहे वो ब्लशर हो, चाहे वो ब्रॉन्जर हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, हमेशा अच्छे से अप्लाई होगा. आपके फेस पे लाइन्स एंड स्ट्रीक्स नहीं आएंगे. एंड आई हैव एक्चुअली सीन दैट इफ यू यूज़ अ गुड क्वालिटी ब्रश द प्रोडक्ट एक्चुअली स्टिक्स टू द स्किन एंड स्टेज ऑन प्रिटी लॉन्ग. So I would suggest investing in good quality brushes. I'll just show you the ones that I have right here. So these ones are Real Techniques और ये कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं. ये मैंने आई थिंक आज से 5 साल पहले खरीदे थे. So they're still holding up, which is another plus of buying something good quality. अगर आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बार नहीं लेना पड़ता. ये चीज़ें सालों साल टिकी रहती है. And I of course take care of these. So these are my Real Technique brushes. And अभी recently मुझे गिफ्ट मिले थे ये वाले ब्रशेज. These are Juicy Couture brushes. And honestly मुझे Real Techniques वाले अभी भी अच्छे लगते हैं. चाहिए थोड़े और एक्सपेंसिव होंगे, दे आर गुड बट दीज आर द बेस्ट. सो ऑफकोर्स बाय गुड क्वालिटी टूल्स टू अप्लाई योर प्रोडक्ट. आप एक नॉर्मल ब्लशर खरीद लीजिए बट अगर आप उसको इस ब्रश से लगाएंगे तो वो बहुत ही लाइक ब्लेंड हो जाता है स्किन में एंड इट लुक्स लाइक यू हैव अ नेचुरल फ्लश एंड दैट्स द लुक दैट वी आर गोइंग फॉर गाइज. सो इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी ब्रशेज. एंड ऑफकोर्स इज अ वेरी स्मॉल थिंग टू मेंशन बट मैं ज़रूर मेंशन करूंगी कि एक अच्छा आईलैश कर्लर लीजिए. मार्केट में बहुत सारे आईलैश कर्लर
कलर्स हैं, फ्रॉम वेरी वेरी लो क्वालिटी एंड वेरी वेरी चीप टू वेरी वेरी एक्सपेंसिव. आई हैव समथिंग विच इज इन द मिडल. इट इज बाय ट्वीजरमैन और ये मैंने आज से आई थिंक 7 या 8 साल पहले खरीदा था. मैंने आज तक इसका ये अंदर का रिम भी चेंज नहीं किया है, ऑल्दो इट कम्स विद एन एडिशनल रिम, बट मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. एंड आई डू यूज दिस अ लॉट. आई यूज इट एवरी सिंगल टाइम आई डू माई मेकअप. सो ये मुझे आई थिंक तब 1000 या 1200 रुपये का आया था और तब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट गाइज 8 साल हो गए हैं तो इमेजिन ये अब तक बिल्कुल ठीक है. एंड इट कम्स विद 2 more ऑफ दीज थिंगीज. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू रिप्लेस वन नाउ. बट डू इन्वेस्ट इन अ गुड आई लैश कर्लर, बिकॉज आई लैश कर्लर की एक शेप होती है जो कि आपके आई के साथ आराम से बैठ जाए तो सारी लैशेज एक बार में कर्ल हो जाती है. यू डोंट हैव टू पुल एंड टग. सो मेक श्योर करिए कि आप अच्छे टूल्स लीजिए, इन्वेस्ट इन गुड टूल्स. और इतने सारे ब्रशेज लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. रियल टेक्निक से एक बेसिक सेट आता है. आई विल ट्राई एंड पॉप अप अ पिक्चर राइट हियर, जिसके अंदर आई थिंक एक फाउंडेशन ब्रश होता है, एक ब्लश नहीं होता, फाउंडेशन होता है, एंड देयर इज अ फ्लैट ब्रश. देयर आर लाइक 4-5 ब्रशेज एंड शुरू करने के लिए वो बिल्कुल ठीक है. इफ यू वांट प्लीज लीव अ रिक्वेस्ट. आई विल डू अ वीडियो ऑन द मस्ट हैव ब्रशेज. And yeah, so do invest in good brushes and eyelash curler. Next makeup product जिसमें आपको जरूर invest करना चाहिए वो है एक अच्छा makeup setting spray. Now a lot of people might think that do we really need a makeup setting spray? I know बहुत सारे लोग तो use भी नहीं करते हैं, but guys let me tell you it is very very important to invest in a गुड मेकअप स्प्रे. आप कभी ट्राई कीजिएगा, अगर आपका मेकअप ओके लग रहा हो उसके बाद एक अच्छा स्प्रे कर लीजिए एंड इट ऑल काइंड ऑफ सेट्स एंड ब्लेंड्स एंड इट लुक्स लाइक इट्स a part of your face rather than कि ये रहा blush and ये रहा bronzer and ये रहा highlighter. It comes together and it looks really really nice. So invest in one spray. I have 2 recommendations. एक तो ये वाला है, this also I have almost used up. This is Smashbox Primer Water Photo Finish. So this is something that you can use before doing your makeup as a primer and after as well, and that is exactly what you want. तो ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जिसको आप दोनों टाइम यूज कर सकें, जिससे कि आपको अलग से प्राइमर ना लेना पड़े. एंड दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन. मैं बहुत ऑयली हूँ तो अगर मैं कोई स्प्रे लगाऊँ तो मैं बहुत जल्दी एक डिस्को बॉल या फिर एक ऑयल का बॉल लगने लगती हूँ, बट दैट डजंट हैपन विद दिस वन. एंड द सेकंड रिकमेंडेशन दैट आई हैव इज मैक प्राइम, व्हाट इज इट कॉल्ड, मैक सेट एंड प्राइम, बट पता नहीं क्यों नाम याद नहीं आ रहा है. एनी हाउ तो वो कई बार होता है ना कि आप एक रास्ते रोज जाते हो बट आपको किसी रोड का नाम पता नहीं होता. दैट्स एक्जैक्टली व्हाट इट इज. सो आई मैक प्रेप एंड प्राइम, आई हैव यूज्ड 2 bottles ऑफ इट ऑलरेडी. इट इज अ रियल नाइस प्रोडक्ट. आप उसको एज अ प्राइमर भी लगा सकते हैं, एज अ सेटिंग स्प्रे भी लगा सकते हैं, एंड इट एक्चुअली सेट्स योर मेकअप फॉर द एंटायर डे. और जब भी आपको लगे मेकअप थोड़ा सा थोड़ा सा हिल रहा है, पैची हो गया है या कुछ भी है, कई बार बहुत मॉइस्ट वेदर में होते हैं तो ऐसा बहुत ज्यादा हो जाता है, देन जस्ट गिव योर फेस लाइक अ वेरी गुड स्प्रिट्ज एंड इट्स गोइंग टू लुक फैबुलस अगेन. So it's very important to invest in one good spray and it's going to last you pretty long. Next is a product जो कि अब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं, which is eyelashes. I have been using eyelashes for almost 5 years. I still have them on. मैं वहाँ तक पहुँच गई हूँ कि जहाँ मैं मूविंग कार में आंखें बंद में भी eyelashes लगा सकती हूँ. It actually changes your makeup game, but make sure that whenever you are buying eyelashes, always buy only good quality eyelashes, guys. आप उसको literally अपनी eyelashes पे stick करते हैं तो you have to make sure कि जो बैंड हो lashes का वो बहुत बेंडेबल हो और ट्रांसपेरेंट हो तो और भी अच्छी बात है. आई ऑलवेज वेयर दीज आई लैशेज. These are Ardell Demi Wispies and they also have a one pair which is called as Demi Lovey. They are also fabulous. You can buy it online. I always get it online. Trick is to always buy this multiple pack and this will last you at least for a year. But of course you have to make sure that you take care of your eyelashes. मैं हर pair of eyelash को I am not kidding एटलीस्ट 2 से 3 महीने चलाती हूँ. यू जस्ट हैव टू क्लीन इट वेरी वेल और आप उसको इसकी केस में वापस रख दीजिए and that is all. Another pair of eyelash that I would recommend is Huda Beauty. It is expensive. It is very expensive. I just got it once but I made a very good use out of it. कई बार आप शादियों में पार्टीज में जा रहे होते हैं तो that looks amazing. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी eyelash खरीदें. अगर आप कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक की eyelash ले लोगे, एक तो पहली बात उसको लगाना बहुत मुश्किल है, then it keeps popping from here or here, या फिर वो बीच में से उठना शुरू कर देती है. I have tried. I got a pair just to try and it does not work. Believe me, इसमें इन्वेस्ट करना एक बारी is much better than buying like बहुत सारी
MEC eyelashes जो eventually आपको फेंकनी ही पड़ेंगी. So I highly recommend investing in a good quality eyelash. And guys, last but very important product that you must invest in is a good neutral eyeshadow palette. I see so many people buying different eyeshadow palettes of blues and greens and whatnot colors, and I know वो बहुत अच्छे लगते हैं, but कितना लगाएंगे आप उन colors को? So it is very important that you get one palette which has a good variety of neutrals and a little bit of pops that you can actually wear. So this is my recommendation. It is a palette by Anastasia. It is called as Modern Renaissance, and this is a palette that you can create so many looks out of. So it has a lot of colors. It has pinks and neutrals and golds. These are the kind of colors that you will actually wear. So it is very important that you actually save your money on all the other 10 palettes that you buy and you keep in your drawers. They collect dust and you never wear them. And invest in something like this. Now this is expensive, I know, but then this is going to last you for years, like literally years. And आप देखिए आप कितने सारे wearable looks create कर सकते हैं इससे. So I would say that आप एक ऐसा पैलेट लीजिए जिस शैडोज को लगाना बहुत आसान हो. अगर आप बिगनर भी हो तो शैडोज इतने बटरी सॉफ्ट हो कि आप उसको थोड़ा सा ब्लेंड करें और वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए. सो दीज आर द शैडोज जिसको आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है ब्लेंड करने के लिए या अच्छा लगाने के लिए. आप इसमें से कोई भी कलर इंडिविजुअली यूज कर लेंगे तब भी वो अच्छा लगेगा. अगर आप इसको कॉम्बिनेशन बना के यूज करेंगे तब भी अच्छा लगेगा. आई एम वेयरिंग मल्टीपल कलर्स आउट ऑफ दिस पैलेट, एंड ऑनेस्टली जब से मैंने पैलेट लिया यू कैन सी आई हैव यूज्ड इट so much. The best part is that इसके अंदर इतने सारे कलर ऑप्शंस है कि अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो आप एक पैलेट ले जाइए और आपको सब कुछ मिल जाता है. इसके अंदर सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज है. सो अगर आप लेट्स से पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहे हैं, तो वन पैलेट डज एवरीथिंग. द ओनली थिंग विच आई विश इसमें होता हुआ एक ब्लैक आई शैडो, बट देयर यू ऑलवेज हैव योर कोल्स एंड काजल्स, यू कैन यूज दैट. Otherwise, it is very good to buy one good eyeshadow palette, and believe me, it's going to make your life much easier. So these are my top 5 makeup products and tools जिसमें आपको invest करना चाहिए, which is going to make your life easy and make sure that your makeup looks amazing all the time. I hope you like the video. अगर आपके कोई भी suggestions हो, if you want to add something to the list, let me know in the comment section. Please do like the video, guys. Please like and subscribe कीजिए. It's going to really help me a lot. And I guess I'll see you in my next video. Bye.